Hello friends, in the previous class we have started about the theory of demand. What is demand? What are its factors? What are the types of demand? Demand law, demand schedule, demand curve, all of this. And in this class we will learn about another theme, chapter of demand. This is the elasticity of demand. At first I will tell you what is the meaning of elasticity. The dictionary meaning of elasticity is the ability to change or adaptability. This is the dictionary meaning or ordinary meaning of elasticity. But if we go to the language of science, that means the language of physics, the meaning of elasticity is the change in the shape or size of an object with the application of an external force. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से वस्तु या ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज में जो परिवर्तन और चेंज आती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. This is the meaning of elasticity from the physics point of view or from the dictionary point of view. But today we will learn about the meaning of elasticity from the economics point of view. What is the meaning of elasticity in the language of economics? Now we will go to the definition of elasticity. Elasticity means the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity with respect to change in any of its factors like price of the commodity, income of the consumer, prices of related commodities, etc. Now we will see what is the definition of elasticity from the economic point of view. Elasticity means the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity with respect to change in any of its factors like price of the commodity, this is one factor, income of the consumer, this is another factor, prices of related commodities, this is another factor. There are so many factors which govern the demand. But now here the main factors are price of the commodity, income of the consumer, prices of related commodity. So elasticity means the change in quantity demanded. How the quantity demanded changes due to the application of external force. What are the external force here? Price of commodity. When the prices of commodity changes in the demand law, we have
learn about the prices of commodity changes, quantity demand changes, income of the consumer if changes, quantity demanded also changes, prices of other commodity that means related commodity उसका प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होता है. This change of quantity demanded due to change in any of the factors. What are the factors may be? But here the main thing is the change in quantity demanded. ये change in quantity demanded due to the change in the factors. This is known as elasticity of demand. This is the ordinary meaning or the economic meaning of elasticity of demand. Now we will come to the types of elasticity of demand. What are the different types of elasticity of demand? There are mainly three types of elasticity of demand. Types. कितने टाइप्स का होते हैं? 3 types. There are 3 types of elasticity of demand. Number 1 is price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand क्या? Price change होने से price of the commodity. I have underlined this. Price of the commodity change होने से demand में जो change आता है इसको बोलते हैं price elasticity of demand. The second type is income elasticity of demand. Income elasticity of demand. See here, I have underlined income of the consumer. So, income of the consumer if changes, quantity demand also changes. The third type is cross elasticity. Cross elasticity of demand. ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस You see here, I have underlined prices of related commodity. ये होता है cross elasticity of demand. In this part, you will come across the cross elasticity of demand. What is cross elasticity of demand? When we will go through the cross elasticity of demand, you will learn everything about what is cross elasticity of demand. But cross elasticity of demand means if the prices of related commodity or other commodity changes, demand for the commodity changes. So this is your cross elasticity of demand. Now we will basically see what are the types of elasticity. Number 1, price elasticity of demand. Number 2, income elasticity of demand. Number 3, cross elasticity of demand. Now we will read about one by one. What is price elasticity of demand first, then income elasticity, then cross elasticity. Now I will write down price elasticity of demand. What is the definition of price elasticity of demand? Price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change
change in its price. So what is price elasticity of demand? Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness. Degree of responsiveness means proportion of responsiveness, percentage of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in its own price or price. Price change होने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now we will go to what is the formula for measuring price elasticity of demand. The formula for measuring price elasticity of demand. What is the formula? Formula for price elasticity, the symbol for price elasticity of demand is E basement P, EP. E elasticity, P price. So this is price elasticity of demand. Formula for this is percentage change in quantity demanded of a commodity divided by percentage change in price of that commodity. This is the formula for EP. How we will derive the EP formula for EP? So EP formula is percentage change or proportionate change in quantity demanded. Quantity demand में कितना percentage change होता है with respect to percentage change in its price. प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है. बिकॉज वी सी दैट देयर आर सर्टेन कमोडिटीज हुज प्राइस एवं और क्वांटिटी चेंज दिस वेरीज. सपोज प्राइस चेंजेस लार्जर, क्वांटिटी चेंजेस स्मॉलर. प्राइस चेंजेस स्मॉलर, क्वांटिटी चेंजेस लार्जर. So we will derive what is the percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in price. Equal to, how we will calculate percentage change? Percentage change कैसे होता है? Change in quantity demanded divided by इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100. ये परसेंटेज होता है. कितना चेंज हुआ, कितना ओरिजिनली था डिवाइडेड बाय इनटू 100. ये हुआ आप लोग का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अभी डिनोमिनेटर में हम लोग आएंगे. डिनोमिनेटर में है क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये भी उस तरफ होगा. चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनली वो कितना था. इनिशियल और ओरिजिनल इनिशियल प्राइस of the commodity. हम लोग इसको into 100. So परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसी का अगेंस्ट में हम लोग बिठा दिए चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100. ये इसका परसेंटेज हो गया.
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके लिए हम लोग पुट किए चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल और ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू 100. नाउ we will cancel 100 and 100. Now we will put symbol for this. What is the symbol for this? The symbol for change in quantity. Change का symbol होता है delta. This is the symbol for small change. Change in quantity demanded, ये आपका डेल्टा क्यू. इनिशियल क्वांटिटी कितना था इनिशियली, ओनली क्यू हम लोग का पास में था. ये चेंज हुआ डेल्टा क्यू. इनिशियली हम लोग का पास क्वांटिटी कितना था, ओनली क्यू. ये नीचे वाला चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस फिर होगा डेल्टा पी. इनिशियली प्राइस कितना था, पी. ये आपका ईपी को हम लोग डेराइव करते हैं. नाउ आई विल रिवर्स दिस. डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी. ये मैंने रिवर्स कर दिया, ये फ्रैक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय, यहीं पर लिखते हैं इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसीलिए हम साइड चेंज कर लिए. डेल्टा के नीचे हम लोग डेल्टा के ले गए. ए पी इनिशियल प्राइस, क्यू इनिशियल क्वांटिटी. सो नाउ the formula for EP will be EP equal to delta Q by delta P into P by Q. This is the measurement for EP. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट ये होता है फॉर्मूला. EP इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q. फ्रेंड्स, वी नो दैट the relationship between price and quantity demanded is always inverse. In normal case, the relationship between price and quantity is inverse. But in special cases, exceptional cases, there are other relationship like positive relationship, no relationship, etc., etc. But in normal cases, the relationship is inverse. Due to inverse relationship, the sign will be negative. So here the sign is negative. EP here is negative. To make EP positive, here EP is negative because the relationship between price and quantity is indirect or inverse. So EP is negative. To make EP positive, we have to put a modulus sign. This is the modulus sign. So by putting a modulus sign, the EP will be automatically be positive. So this is the formula for EP or price elasticity of demand. So from this we come to know that price change होने से quantity demand में जो change आता है, इसी को बोलते हैं price elasticity of demand. And what is the formula for price elasticity of demand? Friends, in your exam, in your foundation exam, the numerical sums will come from this formula. There are also other formulas I will tell you, but you have to remember this formula. This is the main primary formula for your numerical questions. This is the elasticity formula. Another formula are also there, I will tell you later. But for price elasticity, this is the main formula. EP equal to delta Q by delta P into P by Q. You have to remember this formula. Now, we will come to what are the types of price elasticity. Different types of price elasticity. There are so many types of, there are 5 types of price elasticity. We are continuing or only the price elasticity. There are other elasticity also, the income elasticity, cross elasticity, but
Now we are only continuing your price elasticity. What is the definition of price elasticity? What is the formula for measuring price elasticity of demand? And now we will come to what are the different types of price elasticity. Types of price elasticity. Mainly there are 5 types of price elasticity. Number 1, first type. Elasticity means change in quantity demanded with respect to change in price. So, first type of price elasticity is elastic demand. Elastic demand. What do you mean by elastic demand? Elastic means change. Demand में जो change होता है ये होता है elastic demand. Elastic demand में क्या होता है? Price जितना change होता है quantity demand में उससे ज्यादा change आता है. So it is known as elastic demand. So what is the definition for elastic demand? That if the proportionate change in quantity demanded is greater than the proportionate change in price, it is known as elastic demand. Then, what we see from this definition? If the proportionate change in quantity demanded is greater than the proportionate change in price of the commodity. Price of the commodity. प्राइस में जितना चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में उससे ज्यादा ग्रेटर चेंज आता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड. Now I will go to the diagram for elastic demand. What is the shape of elastic demand? X axis quantity measure होता है, Y axis price measure होता है. Now we will draw the demand curve. In this case, the demand curve will be more flatter. So demand curve is like this, a flat demand curve. This is demand curve D1. Suppose the price is, now we'll see how the change in price and change in quantity look like. Suppose the initial price is P, quantity demanded is Q. Now suppose price falls to P1, we will see what will be the amount or quantity. Q1. Now, what is the area or what is the amount of change in price? Price में कितना fall किया? What is the fall in price? This is your fall in price. This is our delta P. Due to the fall in this price, P से P1 fall किया. So ये P से P1 इसको हम लोग बोलते हैं change in price और delta P. Due to this change in price delta P,
क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू दिस फॉल इन प्राइस, प्राइस यहाँ पर फॉल किया, सो लो बोलता है प्राइस फॉल करने से क्वांटिटी डिमांड में राइज होता है. सो ड्यू टू द फॉल इन प्राइस डेल्टा पी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. सी हियर, दिस इज आवर डेल्टा क्यू. So this is delta P, this is delta Q. You see what is greater, whether delta P or delta Q? Obviously delta Q is greater than delta P. So from the definition we know that the proportionate change in quantity demanded is greater than proportionate change in price. Price का proportionate change इतना हुआ, quantity demand में proportionate change इतना हुआ. So now we will derive EP. What will be EP in this case? EP is, EP का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q by डेल्टा P into P by Q. ये होता है हम लोग का EP का फॉर्मूला. थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे EP का फॉर्मूला. Now we will put this amount of delta Q and delta P in order to find out what is the value of EP. So EP के लिए हम लोग को ये ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं लेना है. हम लोग को ईपी मीन्स चेंज, चेंज का पोर्शन हमको लेना है. सो डेल्टा क्यू, ये हमारा डेल्टा क्यू, ये हमारा डेल्टा पी. वी सी दैट इन दिस केस हियर डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी. Delta Q is greater than delta P. Now in this fraction we see that the numerator is greater than the denominator. So if the numerator will be greater than the denominator, then the fraction will be EP का value कितना होगा? Greater than 1. Now we get the value of EP. That means EP here is greater than 1. So in the case of elastic demand, EP का मेजरमेंट वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1. In which case, now we'll come to the example. In which type of commodity the value of EP will be greater than 1. प्राइस में थोड़ा चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो ज्यादा चेंज होता है, प्राइस थोड़ा फॉल किया, क्वांटिटी डिमांड कितना राइज हो गया. सो ये एग्जाम्पल होता है जनरली लग्जरी गुड्स. Luxury goods. In case of luxury goods, we know that luxury goods are costly items. Common people, they cannot afford for these luxury goods. But when the price of these luxury goods fall to a certain level, common people, they think that now it is our affordable capacity. It is not beyond our affordable capacity. It is in between our affordable capacity. So we will purchase these goods. So थोड़ा प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो ज्यादा चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड. इन दिस केस EP is greater than 1 and the example for this type of commodity is luxury goods like AC, car, refrigerator, etc. ये सब होता है कॉस्टली आइटम. दैट मीन्स लग्जरी गुड्स. सो इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स. एक लग्जरी गुड्स आप लोग को एग्जाम में दे देगा, कार या एसी या रेफ्रिजरेटर या जो लग्जरी गुड्स होता है. इन दिस केस व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? आप लोग का ऑप्शन में रहेगा EP greater than 1, EP less than 1, EP equal to 1, EP equal to 0, EP infinite. ये कितना ऑप्शन आएगा. सो आप लोग को यहाँ से चुनना है which is the correct appropriate scientific answer, because you will be confused. If you know the details of this, you will not be confused in the exam hall. So in case of elastic demand, EP is greater than 1. In case of luxury goods, EP is greater than 1. Now we'll come to the second type of price elasticity.
The second type of price elasticity of demand is inelastic demand. Inelastic demand. What is inelastic demand? This is just the reverse of the prior. This is just the reverse of elastic demand. What is the definition? If the proportionate change in quantity demanded for a commodity is lesser than the proportionate change in price of the commodity. It is known as your inelastic demand. In case of inelastic demand, what we will see? The proportionate change in quantity demanded for a commodity is lesser, is smaller than the proportionate change in price of the commodity. Price में जितना change होता है, quantity demand में उससे कम change होता है. So price change के लिए क्वांटिटी डिमांडेड इतना रेस्पॉन्सिव नहीं होता है, ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं होता है, कम रेस्पॉन्सिव होता है. सो दिस इज इनइलास्टिक डिमांड. नाउ विल गो टू द डायग्राम फॉर इनइलास्टिक डिमांड. In this case, the demand curve will be steeper, more steep, not flat just like the elastic demand. The demand curve will be steep like this. This is our demand curve. Just like the side of a mountain. The mountain side is steep. Just like the side of a mountain, the demand curve here, the shape of demand curve is steeper. So now we'll see the price and quantity. Change in price and change in quantity. Suppose this is our initial price. Quantity is this much. OP is initial price and OQ is initial quantity. Suppose price changes, इतना price change हो गया P1 due to change in price or due to fall in price. We see here the price falls. Due to fall in price, quantity demanded rises. Price fall करने से quantity demand rise करता है. So now our quantity demand will be Q1. Now we'll see what is change in price and what is change in quantity. What is delta P and what is delta Q. This much is our delta P. This is our delta P. P से P1, ये delta P. Q से Q1, this is our delta Q. Now we'll find out the delta P and delta Q. We will put this value of delta P and delta Q in the formula of elasticity and we will find out the value of elasticity in case of inelastic demand. So now EP का value कितना होगा in this case? Now we will calculate. EP equal to delta Q by delta P into P by Q. So change portion, always we have to take only the change portion. So in this case we see which is greater, whether delta P or delta Q. Obviously we see that delta P is greater than delta Q or delta Q is smaller than delta P. So here delta Q less than delta P. Now EP कितना होगा? EP equal to, we see in this
fraction delta Q by delta P, we see delta Q is in the numerator, delta Q is denominator. So in this case, this denominator is greater than numerator. So in this case, delta Q is less than delta P. So EP क्या होगा? ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया फ्रैक्शन में. सपोज 4/5, ये कितना आएगा? पहले आप लोग का पॉइंट आएगा 0.8. सो ये 1 से छोटा हो गया, इसीलिए यहाँ पर ईपी कितना होगा? लेस देन 1. ईपी का वैल्यू कितना होगा? लेस देन 1, क्योंकि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होने से फ्रैक्शन आप लोग का पॉइंट में आ जाएगा. पॉइंट मीन्स इट इज लेस देन 1. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, ईपी का वैल्यू कितना होगा? लेस देन 1. ईपी इज लेस देन 1. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ईपी हियर. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है? द ईपी लेस देन 1, दैट मीन्स प्राइस में जितना चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड में उतना चेंज नहीं होता है. प्राइस जितना फॉल किया, क्वांटिटी डिमांड उतना राइज नहीं किया. So fall in price is greater than rise in quantity demanded. The example is essential commodity or necessary goods. Necessary goods. In necessary goods क्या होता है? Food, clothing, ये सब होता है. नमक, ऑयल, ये जो सब होता है ये नेसेसरी और एसेंशियल कमोडिटी. इन केस ऑफ नेसेसरी और एसेंशियल कमोडिटी, प्राइस जितना फॉल करता है, आदमी लोग क्वांटिटी डिमांड उतना ज्यादा नहीं इंक्रीज करते हैं. सो नेसेसरी गुड्स कैसे हो, आप लोग को वो दे देगा नेसेसरी गुड्स और एसेंशियल गुड्स. इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 4 ऑप्शन. सो यू हैव टू सिलेक्ट in what is the value of price elasticity in case of necessary goods. It is less than 1. Now we will come to the third types of price elasticity of demand. थर्ड टाइप क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और यूनिट इलास्टिक. वी नो दैट यूनिट मीन्स क्या होता है? यूनिट मीन्स 1. यहीं पर ईपी का वैल्यू क्या होगा? What is the definition of unitary elastic demand? If the proportionate change in quantity demanded is equivalent to the proportionate change in price. What is the definition of unitary elastic demand? If the proportionate change in quantity demanded is equivalent means just equal to the proportionate change in price. प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हुआ, जितना प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में जस्ट इक्वल प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज होगा. सो सपोज 5% the price of a commodity fall 5%, the quantity demanded for that commodity rises just equal, that means 5%.
क्वांटिटी राइज कितना करेगा? 5% राइज करेगा. सो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट. चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड are equivalent to each other. This type of elasticity is known as unitary elastic demand. This is our unitary elastic demand. Now we will go to what will be the diagram for this type of price elasticity. In this case, the demand curve will the hyperbolic shape, the rectangular hyperbola, never touches the axis. A rectangular hyperbola never touches the axis, remain equal distance from the axis. यहाँ से जितना distance रहेगा यहाँ पर उतना ही distance रहेगा. This type of demand curve is the shape is rectangular in shape. So in this case we will see, suppose price is here P, quantity demanded is Q. Price falls to P1, quantity demanded rises to Q1. Now we see the change in price and change in quantity demanded. This is our delta P. Delta P. This is our delta Q. We see the change in price is just equal to the change in quantity demanded. So what will be the value of EP? EP equal to delta Q by delta P into P by Q. Here डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा P. सो ये दोनों इक्वल हो गया. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाने से ये फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1. EP इक्वल टू 1. सो इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड EP का वैल्यू कितना? EP इक्वल टू 1. इसी का एग्जाम्पल ये होता है रेयर केसेस. इक्वली 5% प्राइस फॉल किया, इक्वली 5% क्वांटिटी राइज किया. ये रेयर केसेस. ऑल दीज आर इमेजिनरी केसेस. इसी तरह थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये वन टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. द एग्जाम्पल आर रेयर केसेस. Exceptional cases. In ordinary cases, such type of examples are not seen. In rare cases, we can say that this is an imaginary type of EP. Now, we will come to the fourth type of elasticity or price elasticity. Perfectly elastic demand. The fourth type of elasticity is perfectly elastic demand. This is our. What is the definition of perfectly elastic demand? When the consumers are
ready to purchase all of the quantities of a commodity at a particular price and unwilling to purchase anything if the price will be a slight higher than this. What is the meaning of this definition? When the consumers are ready to purchase all of the commodity that are able to purchase at a particular price. In a particular price, the consumers are ready to purchase all of the commodity, all of the quantity of the commodity. That means they are ready to purchase large number of quantity of the commodity. That means up to the infinity. Whatever may be the quantity of commodity, they will ready to purchase only at a particular price and unwilling to purchase any of the commodity if the price will be a slight higher than this. But from this price, if the price of the commodity will rise a slight higher, suppose the price of the commodity is 50, the rupees 50. If the price rises to 51, in this price 50, the consumers are ready to purchase large amount of commodity, which can say up to infinite amount of commodity. But if the price will rise a slight higher than this price, that means I can say 51 or 50.50 paisa, the consumers are unwilling to purchase a single commodity. That means in this case we can say that the price here remain constant, the price here remain fixed. In that fixed price, the consumers are only ready to purchase whatever the amount of commodity, quantity of the commodity may be. But they will not purchase a single unit of the commodity when the price will be higher. Higher means slight higher. In this case, the demand curve will be like this, you see. I am drawing the demand curve. This is x and y axis, price and quantity. So in this case, the demand curve will be horizontal in nature, parallel to the x axis. यहाँ पर देखो, see here, the price is P. In this price, the consumers are, this is the per unit price. ये होता है per unit price. In this per unit price, the consumers are ready to purchase quantity of commodity up to infinite, because this is a parallel line. The consumers are ready to purchase quantity of the commodity up to infinite. But if the price will slight rise up to P1, P1 को price जब rise करता है, quantity of commodity, consumers will not purchase a single unit of the commodity. So here it is the notion that in this case the price will remain fixed. In this fixed price, the consumers are ready to purchase. जितना अमाउंट हो सकता है उतना अमाउंट वो लोग परचेज करेंगे.
What will be the value of EP here? We see this is a parallel line, horizontal line. EP is delta Q by delta P into P by Q. In this case, we see that price doesn't change. Price is constant. So, change in price, delta P, we can say that it is 0 or we can say that it tends to 0. डेल्टा पी में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है. सो प्राइस रिमेन फिक्स. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईपी? ईपी इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी. वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी 0 into P by Q. So now here the fraction is delta Q by 0. This is the changing portion, elasticity का portion होता है. So the value of delta P is 0. यहाँ पर क्या होता है? डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है. So नीचे 0 आ जाने से वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड और इनफाइनाइट. So EP equal to the value of EP is undefined, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन का नीचे 0 आ गया. नीचे 0 होने से वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट और अनडिफाइंड. So in case of perfectly elastic demand, EP equal to infinite. ये भी एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल, it is an imaginary type of example. Price remain constant. We cannot see price remain constant. Price in our market, in our ordinary day-to-day market, we see that price is variable. There is bargaining price also. So price, in the same price, a consumer will purchase up to infinite. This is an rare case. This is an imaginary case. So it is also a rare case. When you will go to your market chapter, there you will see in perfectly competitive market, the demand curve is just like this. The demand curve is horizontal, parallel to x-axis. And in that market, the characteristic features of perfectly competitive market, the first characteristic feature of perfectly competitive market is price remain constant. Large number of buyers and sellers and price remain fixed. So the buyers and sellers are only price takers, not price makers, because here price fixed, they cannot change the market price. This is the example of perfectly competitive market where the price remain fixed and the demand curve or price line is a parallel axis, parallel line. This is all about our perfectly elastic demand. Then we will go to our fifth type of elasticity of demand. Fifth type of elasticity of demand is परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जस्ट अपोजिट होता है. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. In this case, what is the definition of perfectly inelastic demand? When the proportionate change in quantity demanded doesn't respond to proportionate change in price.
perfectly inelastic demand. Now we will analyze what is the definition of perfectly inelastic demand. In this case we see the proportionate change in quantity demanded doesn't respond to proportionate change in price. प्राइस में चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है. This is known as your perfectly inelastic demand. Now we'll see from the diagram how it looks like. In this case, the demand curve will be vertical in nature. This is our demand curve. This is vertical in nature. Now we see, this is our initial price. This is our initial quantity. OP is initial price and OQ is initial quantity. Now we see price falls to P1. Quantity doesn't respond to this fall in price. Quantity remains at the same point, OQ. Suppose price rises to P2. Quantity remains the same. So in this case what we see? Price चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है. सो ईपी का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. हियर वी सी कौन सा चेंज होता है कौन सा चेंज नहीं होता है. हियर प्राइस चेंजेस, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट. हियर डेल्टा क्यू इक्वल टू 0. परफेक्टली इलास्टिक में क्या था? डेल्टा पी इक्वल टू 0. यहाँ पर क्या रिवर्स हो गया? डेल्टा क्यू इक्वल टू 0. हेंस ईपी इक्वल टू 0. डेल्टा क्यू का अगेंस्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट किए 0 बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. नाउ न्यूमरेटर अभी 0 हो गया, ऊपर वाला 0 हो गया. न्यूमरेटर 0 होने से फ्रैक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है. So in this case, P equal to 0. In case of perfectly inelastic demand, प्राइस में चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड रिमेन अनरेस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस. So the EP in this case EP is 0. Example क्या होता है? प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी में चेंज कोई भी चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल क्या होता है? अर्जेंटली नेसेसिटी मेडिसिन्स. ये होता है एक टिपिकल एग्जाम्पल. अर्जेंटली नेसेसरी मेडिसिन कैसे प्राइस इलास्टिसिटी 0 होता है. ये ऑर्डिनरी मेडिसिन का केस नहीं होता है. वो ठंडा सर्दी ज्वर खांसी ये ऑर्डिनरी मेडिसिन का केस नहीं होता है. जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, लाइफ सेविंग, ये होता है लाइफ सेविंग मेडिसिन. सपोज फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल. द लाइफ सेविंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज क्या होता है? डायबिटीज, आपका ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है. इसी केस में जो मेडिसिन आदमी लोग खाते हैं, पेशेंट खाते हैं, उसी मेडिसिन को बोलते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन. इन केस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0. देखो कैसे? सपोज हार्ट पेशेंट एक मेडिसिन खाते हैं, उसका नाम होता है सर्बिट्रेट. ये सर्बिट्रेट मेडिसिन हार्ट पेशेंट के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ दिस सर्बिट्रेट पर टेबलेट इज 50 रुपीज. सर्बिट्रेट का प्राइस होता है 50 रुपीज. डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया पेशेंट को रोज डेली एक टैबलेट खाने के लिए. सपोज प्राइस ऑफ द मेडिसिन सर्बिट्रेट राइजेस टू
100 पर टैबलेट राइज हो गया। अभी क्या आदमी पेशेंट सोचेगा अभी तो मेडिसिन का प्राइस डबल हो गया, तो इसीलिए मैं मेडिसिन को हाफ करके खाएंगे। ये तो संभव नहीं है, हाफ करके खाने से वो मर जाएगा। ये एक केस होता है। सो प्राइस राइज करने से क्वांटिटी सेम होता है। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ द मेडिसिन फॉल्स टू ₹25 पर टेबलेट। वो फॉल हो गया, हाफ हो गया। डबल हो जाने से सेम एक टेबलेट खाना है। अभी प्राइस हाफ हो गया। अभी वो सोचेगा प्राइस तो हाफ हो गया, मैं 2 मेडिसिन रोज खा लेंगे, जल्दी जल्दी में स्वस्थ हो जाएंगे। सो 2 मेडिसिन खाने से भी उसका दिक्कत होगा, वो मर जाएगा। सो the patient have to take only 1 medicine, whatever may be the price, whether it increases or decreases. So this is the case of perfectly inelastic demand where EP is 0. So friends, this is all about your types of price elasticity. If you like my video, please don't forget to share and subscribe it, so that more and more number of students, your friends, will be benefited from this video. Thanking you.